Sir, आज 3:30. So Arush, question number 5. Yeah. ABC is a triangle where angle B is 45 and AB upon BC is given root 2. Yeah. Hmm. So AB or BC मतलब the distance of AB upon distance of BC. Easy. So we can basically say the distance of AB is as good as root 2 times Root 2 distance of BC. BC. ठीक है. Yeah. And we have to find Z2 in terms of Z3. Can we say Arush that Z3 rotated by 45 degrees about About Z2 Z2 will be Z. will be Z1. Yeah. तो Z1 कैसे मिलेगा? Z1 में हमें वो रोटेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. Now this time Hmm. rotation is about Z2, बराबर, which means you will Yes. have to multiply first Z3 minus Z2 with e raised to I pi by 4. Hmm. अच्छा, दूसरा, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जो मॉड्यूलस है, वो भी सेम नहीं है. मॉड्यूलस का रेशियो रूट 2 है, बिकॉज मॉड्यूलस मतलब डिस्टेंस, राइट? तो डिस्टेंस ऑफ ए एंड Hmm. बी इज रूट 2 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी. तो यहाँ पे वो रूट 2 Yeah. हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आरुष. चेक दिस, आर यू फॉलोइंग दिस? Of yes. प्लस Z2 because it is about Z2. Sir, जो formula दिया था that Same distance formula. The was. only modification is this root 2 is added now because here the modulus is not same. It is root 2 times of BC. Hmm. And Yeah. we want Z2 in terms of Z1 and Z3. तो इसको पूरा solve करना पड़ेगा e raised to I pi by 4 को. So this will be, मैं थोड़ा directly लिख रहा हूँ. When we take cos pi by 4, it will be 1 by root 2 1 by plus root. I sin pi by 4 will be again 1 by root I 2 is 1 by root. into root 2 plus Z2. So do you realize Arush, इसमें नीचे से root 2 जब बाहर आएगा, that root 2 will get cut with the numerator root 2. Hmm. So we Yeah. have Z1 is equal to Z3 minus Z2 into 1 plus I will be left Arush Yeah. plus Z2. Plus इसको Z. पूरा expand करना पड़ेगा. तो Z1 is equal to Z3 minus Z. Z3 plus Z2 I plus Z3 Z. minus I Z2 I Z2 plus plus Z. Z2. Because we want Z2 in this sum, तो Z2 के टर्म्स को सेम साइड पे रखते हैं. Hmm. ओ, ये तो कट भी हो रहा है. So now we have Z1 is equal to Z3 कॉमन ले लेते हैं, 1 plus I हो जाएगा minus I Z2. I'll take this on the other side Arush. We will get I Z2 is equal to Z3 into 1 plus I. Are you following in this? Yeah. Yeah. तो एक लास्ट स्टेप बाकी रहता है. we'll have to divide by I Arush in this. Hmm. इसको सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज आई कैन नॉट बी केप्ट इन डिनोमिनेटर. सो व्हाट शुड वी डू? Yeah. Sir, multiply divide by. बाय आई. Yeah. So when we do that, when we multiply divide by I, we will get Z2 is equal to Z3 into 1 plus I into I upon I square minus Z1 Hmm. I upon I square. So Z2 will be equal to Z3. This is I plus I square upon minus 1 plus Z1I. Check this, are you following this? So this is Yes. Z1I plus So minus. Z3 into 1 minus I. माइनस है बट मैं ऊपर I माइनस 1 को स्वैप कर रहा हूँ और उसको मैंने 1 माइनस I लिख Hmm. दिया. हाँ ठीक. बस इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. We'll just leave it हाँ. at this. Okay.
Like the maximum thing that we can do is we can write it as, मतलब वो ठीक है, वो तो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, तो मैक्सिमम ये कर सकते हैं हम इसमें से आई कॉमन ले सकते हैं. This is the हाँ answer. या